Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following content of list to discuss. So let's discuss. The first topic says about Sita Navasel, a Jain heritage site. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है जैन हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु बैटल्स द एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेंस, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है इस हेरिटेज साइट का, ये सब बिखर रहे हैं अभी यहाँ पे. So what is this Sitanabasal? See, this Sitanabasal is a small village in the Pudukkottai district of Tamil Nadu. It was a major center of Jain influence for over 1,000 years, just before the Christian era. Okay, तो ये देख सकते हो यहाँ के artifacts. Okay, तो Sitanabasal is a name used synonymously from the hamlet and the hillock that houses the Arivar Kovil. Okay, that is the temple of Ariha, Jains who conquered their senses, and Ajadipatam, a cavern with 17 polished rock beds. Okay, उसके बाद megalithic burial sites and the Nabachunai turn, that is a small mountain lake with a submerged shrine. Okay, तो ये जो Sitanabasal caves है ना, this is a very 2nd century Tamil Rama cave complex. Okay, which is located in this Pudukkottai district. Okay, and this is, यहाँ पे क्या बोला कि ये rock cut monastery or temple है which serves as a monument of the Jain heritage. Okay, and it has relics of important people from the 7th century. Okay, and these paintings over here are considered to be amongst the best of medieval India's paintings, and second only to even the Ajanta as well as the Bagh caves. Okay, तो यहाँ पे ये जो Sitanabasal है, it is considered by historians to be one of the oldest inhabited area and a major center of Jain influence. तो ये historians considered करते हैं कि ये एक major Jain center है for their respective influence. Okay, so if I say about this temple, okay, ये जो Sitanabasal temple है, this cave temple was built by the Pallava king Mahendra Varma. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सितनबसल जो हम लोग का साइट है, मॉन्यूमेंट है, केव टेम्पल है, ये किसने बनाया था? तो ये पल्लवा किंग ने बनाया था. ओके, पल्लवा किंग, नाम क्या बोला मैंने? महेंद्र वर्मा, MEHENDRAVARMA, महेंद्र वर्मा. ओके, और ये कब बनाया था? इट वॉज अराउंड द पीरियड ऑफ 580 to 630 AD. ठीक है, एंड प्रायर टू हिज कन्वर्जन फ्रॉम जैनिज्म टू हिंदुइज्म. वो बाद में क्या हो गया था? हिंदुइज्म तक कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये जो केव टेम्पल है ये बनाया था इन दिस डिस्ट्रिक्ट विच इज नोन टू बी एज द पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, जो अभी का है. ठीक है, और यहां पे वी कैन हाउएवर फाइंड सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस टू द पांड्यन किंग, also mostly likely this man which is known as the Maran Sendan. ओके, एंड ऑल्सो मरावर्मन. तो हम लोग ने पांड्यन, पल्लवा तो हम लोग का ये बना दिया था, लेकिन हम लोग ने इंस्क्रिप्शंस में पांड्यन किंग्स को भी, द पांड्यस रूलर्स था, उनका भी हम लोग ने एक इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे मिला है. ओके, हाउएवर वी कैन सी दिस इन दिस एरिया वी हैव गॉट वेरियस मेगालिथिक बरियल साइट्स एंड व्हिच आर मच ओल्डर वेयर द मॉन्यूमेंट्स आर डायरेक्टली लोकेटेड. ये बहुत ज्यादा पुराना है. Okay, that is this creatures, that is this monuments, that is this caves which we can see over here. Okay, so we can see that over here there are various features of the Sitanabasal caves, जिसको मैंने बोला एलाडीपट्टनम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, एजाडीपट्टनम, एलाडीपट्टनम. Okay, these are all same things only. Okay, these are what? These are some of the shelter that has been used by the Jains at that point of time. Okay, also the caves have got some of the polished stone birds. ओके, जो पॉलिश स्टोन्स होते हैं वहां पे भी यहाँ पे मिला गया है. ठीक है, एंड वी हैव आल्सो गॉट सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस व्हिच आल्सो टेल्स अबाउट द reign of various rulers of this period. Okay, so therefore in this area or in this place is a very important location for the heritage purpose. So the Sitanabasal caves are home to some of the India's finest cave paintings from the early Middle Ages. एंड दिस आर एग्जांपल्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर. यहाँ पे देख सकते हो ये रॉक है, यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर हम लोग देख सकते हैं, which is very much inspired by the Jain's philosophy and ideology. Thus, this Sitanabasal cave is a rock cut monastery that houses several murals that is made of vegetables and mineral dyes.
and in a variety of colors. And given the time period in which they were created, these paintings are unquestionable masterpiece in their own right. तो यहाँ पे देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंस. लेकिन टुडे वी कैन सी दैट इवन because of this dilapidated conditions, this heritage is directly getting lost. And इसीलिए ये वाला जो चीज है ये डायरेक्टली न्यूज पे आ गया है कि it is directly battling the elements that it directly preserves. It directly says about that period of time when the rock cut architectures was very much of prudent and people were going for various number of architectures. So यहाँ पे इसी का बचाने के इसी को बचाने के लिए they are appealing to the Archaeological Survey of India. So this is the heritage that we need to preserve at the earliest. Okay, so this is the thing about the Seta Navasal chain heritage site. Okay, next आते हैं Operation Make Chakra. Okay, so ये Operation Make Chakra क्या है? So the Central Bureau of Investigation, they directly conducted searches at 59 locations across 20 states and 1 union territory as a part of Pan-India drive against the circulation and sharing of child sexual abuse material. The operation codenamed Make Chakra is being carried out following the inputs received from Interpol Singapore Special Unit based on the information released from the authorities in New Zealand. ओके तो यहाँ पे ये जो कोड नेम दिया गया है दैट इज अ मेक चक्र. ओके ये जो हम लोग को इनपुट्स मिला गया है इंटरपोल के द्वारा, इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा. सो with the very investigation there are various number of offenses happening against child pornography हो रहा है, child abuse हो रहा है, कहीं पे child को sexually exploit किया जा रहा है. तो through such number of activities the CBI today raided some of the 59 locations across 20 states and 1 union territories to capture such number of people who are engaged in such number of crime. ओके तो इसके साथ ही लास्ट नवंबर में एक बात बोलूं तो लास्ट नवंबर द एजेंसी दैट इज द सीबीआई लॉन्च्ड अ सिमिलर एक्सरसाइज व्हिच इज कोड नेम ऑपरेशन कार्बन. ओके ऑपरेशन कार्बन तो ये भी याद रख सकते हो, ये भी न्यूज में था लास्ट नवंबर के टाइम में. ठीक है, तो ऑपरेशन कार्बन व्हिच डायरेक्टली सर्चेस द प्रेमिसेस ऑफ सस्पेक्ट्स इन 13 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी एसोसिएटेड विद दिस चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस ओनली. तो अभी है मेक चक्र और उस टाइम था ऑपरेशन कार्बन. Okay, so therefore today we can see that the CBI even later decided to send requests to even several countries for sharing and gathering some of the informations on the mutual legal assistance treaties. Okay, दो तीन कंट्रीज के साथ हम लोग अगर एक कुछ लीगल एंटिटी कर रहे हैं कि कल परसों अगर हम लोग का यहाँ का क्रिमिनल आप लोग के यहाँ पे भाग गए तो आप लोग कैसे उसको रिपाट्रिएट कर सकते हैं. तो सेम थिंग गोज वाइस वर्सा, अगर इनका क्रिमिनल हम लोग के यहाँ पे आ गया तो हम लोग कैसे उसको रिपाट्रिएट करते हैं. तो ऑल दिस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज आर वेरी मच अंडर कंसिडरेशंस बिटवीन द कंट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज सम ऑफ द अदर कंट्रीज. लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग अपना कानून की तरफ देखें दैट इज द पोक्सो एक्ट व्हिच इज द मेन एक्ट एसोसिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं पोक्सो, POCSO. ओके पोक्सो, तो पोक्सो इज वेरी मच एन इंपॉर्टेंट एक्ट. ठीक है, बिकॉज इफ यू सी अबाउट वन ऑफ द सेक्शंस, सेक्शन 23, ठीक है, सेक्शन 23 ऑफ द पोक्सो डायरेक्टली रिलेट्स द ऑफेंस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस. And under section 155 clause 2 of the CRPC, a police officer cannot investigate a non-cognizable offense without the order of a magistrate. तो यहाँ पे जितने भी हम लोग का सेक्शन 23 से इश्यूज है, once the judge opined the disclosure of the identity of the child who is a victim, okay, is directly a fundamental breach of the right of the child to dignity. तो यहाँ पे हम लोग का इश्यूज है अभी पॉक्सो के हिसाब से. ठीक है, लेकिन हम लोग जितने भी आजकल का जितने भी हम लोग का केस आते हैं तो वो केस हम लोग किसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? थ्रू दिस पॉक्सो एक्ट. बिकॉज पॉक्सो का फीचर्स क्या क्या है? confidence of the victim's identity, gender neutral act, right to life and survival of the child, right to compensation for the victims, no time limit for reporting abuse. लेकिन this POCSO act is today facing various number of issues related to child sexual abuse. क्यों? Because it's a multi-layered problem. Because child sexual abuse is a which negatively impacts child's physical safety, mental health, well-being, and behavioral aspects. And also due to various number of technology, today the child pornography has emerged as one of the bullying phenomena for a prospective accused. And even if I say about the ineffective legislation, although the government of India is very much strict about this POCSO, it has failed to protect the child from sexual abuse. And what is the reason? Because it has the reason, the first main reason is the low conviction rate.
पॉक्सो आज तक कितना कन्विक्शन कर चुके हैं? आजकल हार्डली वी कैन सी अबाउट 32% ऑफ द केसेस आर डायरेक्टली कन्विक्टेड अंडर द पॉक्सो एक्ट. Okay, and the percentage of cases that is pending is around 90%. Also the judicial delay, अगर मैं एक रेप केस आप लोग को याद होंगे, that is the कथुआ रेप case which took 16 months for the main accused to be convicted, whereas the POCSO Act clearly mentions that the entire trial and conviction process has to be done in a period of 1 year. लेकिन इन्होंने कितना लगाया था? 16 months लगा दिया था कथुआ रेप केस में. And this act is very much unfriendly to child, because the challenges that is related to the age determination of the child, especially the law that focus on biological scale and not the mental age. तो ये भी एक इशू है, तो इसको हम लोग को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा. Because today we have seen various number of related initiatives by the government, such as the Child Abuse Prevention and Investigation Unit, Beti Bachao Beti Padhao, Juvenile Justice Act, Child Marriage Prohibition Act of 2006, Child Labor Prohibition and Regulation Act of 2016. तो ये सब हम लोग का है. And instead we can see that there are various related constitutional provisions associated with this child act. तो मैं अगर constitution guarantees every child to have right to life with dignity, article 21, right to personal liberty, article 21, right to privacy, article 21, right to equality, 14, right against discrimination, 15, right against exploitation, 23, 24. Also the child has got the right to free and compulsory elementary education for a children age group between 6 to 14, under Article 21A, which is amended via the 86th Amendment of 2002. And also the DPSPs, which forecasted about the welfare state. In its particular Article 39 Clause F, it casts an obligation on the state to ensure that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner. So therefore, today, the need of the hour is to prioritize the prevention activities against abuse, against creating safe environment for children. So developing a comprehensive outreach system to engage parents, schools, communities, as well as both the police agencies, that is the law enforcement agencies, as well as a lawyer, is directly a need of the hour. Because better implementation of such number of legal framework, policies, national studies and standards could only improve the effectiveness of this POSCO Act. तो इसीलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो इसीलिए अभी यहाँ पे रेट्स किया गया है. बस इस जो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मेक चक्र, ऑपरेशन कार्बन, ये चीज याद रखना कि क्यों ये रेस्पेक्टिवली न्यूज पे है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. डिफेंस एक्सपो 2022. इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग. ओके, तो टुडे वी कैन सी दैट जो होस्ट किया जाएगा, दैट इज द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन डिफेंस डायलॉग, extended 53 African countries and a separate Indian Ocean region plus conclave with participation of approximately 40 countries in also on the anvil. Okay, तो मैं अगर देखूं द थीम ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2022 इज पाथ टू प्राइड. ओके, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, पाथ टू प्राइड. And the aim is to showcase the might of the domestic defense industry, which is now powering Make in India, Make for the World, and resolve of the government at nation at large. So today we have seen India's defense and technology related exports touch the highest ever figure of rupees 12,815 crore in the financial year of 2021-22, 54.1% rise over the previous year. तो यहाँ पे देख सकते हो. ओके, 2015-16 में हम लोग का 14-15 में हम लोग का कितना था, and we can see about 21-22. Okay, so therefore today though India is very much in favor of this expo to directly forecast their defense exports. Okay, मैं अगर थोड़ा डीप एनालिसिस जाऊं अबाउट इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टुडे while India defense imports from the US have gone significantly higher in the recent years, Indian companies have also been increasingly become a part of the supply chain of the US defense companies. Okay, because today we can see that to boost defense exports, there are various steps taken by the Indian government. मेरे को याद है जनवरी 2022 में ही, ये साल के शुरुआत में ही, इंडिया साइंड एन अराउंड $374.96 मिलियन डील विद फिलीपाइंस. ओके, तो फिलीपाइंस के साथ हम लोग ने कितना डील साइन किया था? $374.96 मिलियन, इतना हम लोग ने साइन किया था. Okay, and its single biggest defense export order for the supply of 3 batteries of किसका? BrahMos supersonic cruise missiles का. Also, India has imposed a phased import ban on 310 different weapons, and these weapons and platforms would be indigenized in phases over the next 5 to 6 years. Today, even we can see that in the defense sector, the private sector accounted for around 70%.
तो आज मेजोरिटी स्टेक किसमें चला गया? प्राइवेट सेक्टर्स में. So this increased partnership with the private sector has led to a substantial rise in the defense exports. Okay, and these defense exports are a pillar of the government's drive to attain self-sufficiency in defense production. Because over 30 Indian defense companies have exported arms and equipments to countries like Philippines, like West Asia in Africa, be it Mauritius, be it Sri Lanka, be it Israel, be it Egypt, be it Saudi Arabia. तो सब में क्या है? And these exports include various personal protective items, be it the defense electronic systems, be it the engineering, mechanical equipments, be it the offshore patrol vessels, be it the advanced light helicopters, be it the avionic suits, be it the radio system, be it the radar system. ये सब ने किया था. So today, India still accounts for only 0.17% of the global arms exports. तो ये हम लोग को बढ़ाना है. Okay, ये हम लोग को बढ़ाना है. Because today, if I see about the SIPRI report, जो सिप्री बोलते हैं हम लोग, सिप्री मतलब क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये इंडिया को रैंक करता है नंबर 23 इन द लिस्ट ऑफ मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2015 to 2019. And reason for this dismal performance is India's defense export. So India is now at a target of around $5 billion of exports by the time of 2024. इंडिया ने टारगेट कर दिया कि इंडिया will directly go for a clocking defense exports of around $5 billion by 2024. And इसके लिए ये जितने भी expose होते हैं, okay, even you can see the initiatives recently taken, Defense Production and Export Promotion Policy 2020, okay, which try to focus structured and significant trust to defense production capabilities. Okay, फिर you can see about the strategic partnerships that we are today doing with some of the neighboring nations. So in every period today, we are trying to focus much more because we have got a goal of $5 billion by 2024. तो ये कब होगा? तब हम लोग थोड़ा टर्म्स बढ़ाएंगे. तो इसलिए हम लोग का सेकंड जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, because we know that African countries today needs a lot many number of equipments as well as machinery as well as defense exports for their respective protection because it is very much of a turmoil area. वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है. ठीक है, तो therefore in this period we could see that we could directly boost our manufacturing industry in the time of defense and therefore we could export a lot many number of equipments so that we could earn a good revenue out of such exports. Okay, तो ये हम लोग का यहाँ पे एम है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. सी टर्टल पोचिंग्स डिक्लाइंस. ओके, सो यहाँ पे जब सी टर्टल्स का बात बोला गया है तो यहाँ पे रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट इलीगल कैचिंग ऑफ द सी टर्टल्स हैज डिक्लाइंड इन द फर्स्ट डिकेड of 2010 to 2020 by nearly 30% with some exceptions occurring in large stable and genetically stable diverse marine total populations. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये सी टर्टल्स का जो पोचिंग्स होता था, ठीक है, कभी कभी नेट पे मछली मारने के टाइम में नेट में ही फंस जाता था तो उसके बाद इसको रिलीज नहीं किया जाता है. ठीक है, इसका इलीगल ट्रेड होता है तो वो सब अभी कम गया, 30% यहाँ पे कम हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि लाइक वी हैव सीन a reduce in such number of population who are illegally killed, okay, or in some cases it was illegally trafficked. Okay, because today if you see that the sea turtle species that face the most exploitation, okay, ये कौन कौन है? ये है ये ग्रीन टर्टल एक है हॉक्सबिल टर्टल. ओके, ये दोनों बहुत ज्यादा इसका इलीगल ट्रेड होता है. ओके, इसका बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है. दैट इज द ग्रीन टर्टल एज वेल एज द हॉक्सबिल टर्टल. ठीक है, इसका अराउंड 39% ओके एक्सप्लोरेशन होता है. ओके, और इसका ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है, इसका होता है अराउंड 56%. ये ज्यादा कैप्चर करते हैं, इसका ज्यादा ट्रेड होता है. ओके, बट सिंस दिस पॉपुलेशन आर डायरेक्टली इन लेस तो ये डायरेक्टली स्टेटस में आ जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो अभी ये स्टडीज क्यों किया गया था? द स्टडीज इज डायरेक्टली शोइंग अबाउट अ मार्जिनल डिक्लाइन इन द पोचिंग. ओके, एंड विद अ डिकेड कि यहाँ पे कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना एक्सप्लोरेशन यहाँ पे नहीं हुआ है. ठीक है, कितना इलीगल ट्रेड ऑफ स्पेसीज यहाँ पे नहीं हुआ है. बिकॉज वी कैन सी दैट वियतनाम was the most common country of origin for illegal sea turtle trafficking, while China and Japan serve the destination for nearly all trafficked sea turtle products. Because these turtles are slaughtered for their eggs, for their meat, for their skin, and their shell, as they also face habitat destruction and accidental capture or bycatch in fishing gear, जो मैंने बोला था. Also, these turtles are directly facing today the effects of climate change. Because यहाँ पे टर्टल का एक बात है, जब उन लोग का टेम्परेचर, सपोजली टर्टल ने कहीं पे अंडा दे दिया, ठीक है,
तो सपोजली उस टेम्परेचर वहां पे अगर 25 डिग्री से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट टर्टल विल डायरेक्टली बिकम अ फीमेल, ये फीमेल होगा। और अगर मान लो कि 33 डिग्री सेल्सियस का एक एटमॉस्फेयर बन गया है, ओके, सो सपोजली उस एग के ऊपर 33 डिग्री सेल्सियस का एक एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वार्मथ बढ़ रहा है, तो इट विल बी 100% गारंटेड दैट वो फीमेल ही होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, सो द मेल फीमेल रेशियो इज स्लोली डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे मेल्स कम हो रहा है, फीमेल्स ज्यादा हो रहा है, कम से कम एक मेल के लिए कम से कम 1000 फीमेल्स हो गए आज। तो वी कैन सी सच नंबर ऑफ सिचुएशंस टुडे। तो ये क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। सो देयरफॉर हम लोग को इसको भी टैकल करना पड़ेगा, दैट इज द क्लाइमेट चेंज, टू प्रोटेक्ट दिस नंबर ऑफ स्पेसीज, बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर रेस्पेक्टिव हैबिटेट्स। ओके, सो वी हैव सीन, तो ये जो मैं बात बोला हूं, दिस थिंग्स इज डायरेक्टली फाउंड इन द क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, Queensland of Australia, which is linked to the climate change, which have led to virtually no male green turtle seeing being born. तो यहाँ पे ग्रीन टर्टल्स का पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है, फीमेल्स होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो इन दिस पर्सपेक्टिव टुडे वी सी दैट द सी टर्टल्स which are the marine reptiles with streamlined bodies and large flippers that are well adapted to life in the ocean. So यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे वेरिएशंस मिलता है of this turtles। ठीक है, ये 5 बहुत हम लोग का इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। दिस 5 स्पेसीज आर फाउंड वर्ल्ड वाइड एंड दिस कैन बी फाइंड ओनली मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। ये जितने भी है ये आप लोग को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ही मिलेगा। यू कैन नॉट फाइंड दिस इन सम ऑफ द पोलर रीजन्स। ठीक है, लेकिन देयर इज अ स्पेसीज ऑफ टर्टल which is very much found in the polar regions. तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि what is the name of this turtle which I am directly speaking over here, which is found in the polar regions. ठीक है, तो स्पेसीज का नाम क्या है वो बता दीजिएगा। ठीक है, उसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है, एंड वो स्पीसीज कहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग, ठीक है चलो मैं ये बता ही दिया हूं कि ये एंटार्क्टिक में मिला जाता है। ठीक है, तो एंटार्क्टिक में एक स्पेसीज ऑफ टर्टल मिला जाता है, तो उस स्पेसीज का नाम क्या है और उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, बस ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू अ हिंट दैट ये एंटार्क्टिक में मिलता है। ठीक है, सो ये बाकी जितने हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स में मिलता है, तो इसीलिए दे आर वेरी फेमस, लेकिन ये मिलता है कहां पे, एंटार्क्टिक में। तो इसका नाम बताइए और इसका कंजर्वेशन स्टेटस आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द 5 species of sea turtles that we can find in our country, so you can see this, okay, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नाउ रीजनल न्यूज एसोसिएटेड विद असम, ब्रेले वर्जन ऑफ हेमकोश इज डायरेक्टली रिलीज्ड। ओके, सो अभी हम लोग जान सकते हैं कि व्हाट इज ब्रेले। ओके, यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज ब्रेले। सो इट इज बिन सम ऑफ द पीपल हु आर ब्लाइंड, हु कैन नॉट सी, सो दे डायरेक्टली स्टडीज सच थिंग्स। तो यहाँ पे देख सकते हो उंगली से ऐसे पढ़ता है तो थोड़ा उठा उठा लेता है, तो ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन, ए का मतलब ये होता है, बी का ये, सी का ये, डी का ये, सो दिस इज डायरेक्टली अ रिप्रेजेंटेशन। तो ये ब्रेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये ब्रेल वर्जन ऑफ हेमकोश यहाँ पे निकाल। तो हेमकोश क्या है, इट इज द फर्स्ट etymological dictionary of the Assamese language based on Sanskrit spellings compiled by Hemchandra Borua. So you can see this famous personality. Okay, so it was first published up in the early 20th century, and it was published under the supervision of Captain P.R. Gordon and Hemchandra Goswami. Okay, and it contained around how much? 22,346 words. Okay, and this dictionary still is published by the Hamkosh printers. Okay, and is considered to be the standard reference of the Assamese orthography. So Hamkosh is the second dictionary of Assamese language. The first Assamese dictionary was composed by doctors Miles Brunson, an American Baptist missionary. Okay, तो उन्होंने जो लॉन्च किया था, that is a dictionary in Assamese and English, which was published back by the time of 1867. So this Hamkosh is directly the second dictionary of Assamese language. Okay, and it directly considered this many number of words. So इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि like after more than 125 years, Braille version of the Hamkosh has been conceptualized.
तो इट इज बेसिकली गोइंग विद द Assamese ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी क्या होता है? कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ एन लैंग्वेज. सो देयरफॉर यहाँ पे जो ब्रेली वर्जन है, तो यहाँ पे देख सकते हो चीफ मिनिस्टर, ओके, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ये बुक रिलीज किया जा रहा है. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू कैन सी द नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज दैट इज डायरेक्टली स्टैंडिंग ओवर हियर. ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं. लास्टली द एडिटोरियल, soft power, the new race every country wants to win. Okay, so today if I see about the definition of being a soft power hota kya hai? Soft power is the ability of a country to persuade others to do what it wants without resorting to force or coercion. So this soft power lies in a country's attractiveness and comes from three resources. क्या resources है वो पहला होता है culture, दूसरा होता है political values, एंड तीसरा होता है फॉरेन पॉलिसीज. ठीक है, तो ये क्या है? दिस आर द थ्री पिलर्स ऑफ अ कंट्री गोइंग इन फॉर सॉफ्ट पावर. तो मैंने क्या बोला? सॉफ्ट पावर, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू परसुएड अदर्स टू डू व्हाट इट वांट्स विदाउट रिजॉर्टिंग टू फोर्स और coercion. And the soft powers lies in a country's attractiveness and comes from these three resources, that is cultural, political and foreign. Okay, so today if I see about the soft power of a country like India, so एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है जो रिलीज करते हैं ब्रांड फाइनेंसेस. तो ब्रांड फाइनेंसेस के हिसाब से ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 27th in terms of soft power, because India's main challenge though has been to timely deliver on international projects, लेकिन today we could not deliver some of the good gesture towards the soft power. So therefore, India needs to deliver some of the soft power for creating goodwill, for making some of the strategic investments. Also, the post-pandemic changes are also very important, because after this post-pandemic, we can see the realization of the global problems, which requires global efforts. And today, India's role has gained prominence as the pharmacy of the. तो हम लोग ने कितने लोगों को वैक्सीनेशंस दिए हैं फ्री में. Also, India is directly rising in trade and investment flows. India's delivery framework is also good. India's capacity building is mainly on these components of training, sending team of experts, also making it very much of equitably viable. So in every forms, be it technology, be it grants, be it trade, be it the funds availability, be it the institutional framework, everywhere today we could see that India is directly an emerging nation. तो यहाँ पे वही सब बोला गया है कि व्हाट इज द सॉफ्ट पावर टुडे. तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई जूनियर. He said that in the late 1980s, it is a power of attraction through culture, political ideas and policies rather than coercion. So today, this soft power is directly used by various countries, जो एक टाइम इंडिया यूज किया था. So अभी यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ जो स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स भी एक टाइप का सॉफ्ट पावर होता है. आज जैसे देख लो कि टुडे वी हैव गॉट एनिमिटी विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हम लोग एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, खेल लिए ऑलरेडी. ठीक है, एक जीता एक हारा. देन इवन वी कैन सी दैट हम लोग लाइक इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, अगर मौका मिल जाए तो हम लोग वहां पे भी उन लोग के साथ खेलेंगे. अगर एक मान लो ये तो T20 का है, अगर मान लो 50 ओवर का जो मैच होगा आईसीसी वर्ल्ड कप, तो वहां पे भी हम लोग का हो सकता है, मुकाबला हो सकता है. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या होता है? दिस इज डायरेक्टली अ सॉफ्ट पावर व्हिच द कंट्री इज डायरेक्टली फोरकास्टिंग. इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अर्लियर एथलीट्स, ओके, अगर मान लो मिल्खा सिंह जी को ही मान लो, लेट मिल्खा सिंह जी, तो जिस मिल्खा सिंह जी ने पाकिस्तान गया था खेलने के लिए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी. तो आज ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है ना, ये गेम्स के तरफ हो रहा है, ये गेम्स के तरफ आगे बढ़ रहा है एवरी कंट्री. और चाइना इसमें बहुत माहिर है. क्यों? चाइना क्या करता है? चाइना पीपल टू पीपल कनेक्ट करता है, रिलेशंस बनाता है अगर अदर कंट्रीज के साथ थ्रू द गेम. क्योंकि यहाँ पे जो एथलेटिक्स है फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज सच एज मदागास्कर आर डायरेक्टली ट्रेन इन स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एक्सेट्रा बाय चाइना. तो इससे क्या होता है? यहाँ से भाईचारा बढ़ती है, यहाँ पे रिलेशन सही होते हैं दो कंट्रीज के बीच में. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन सी that even in this 2016 an India report came up with a 20-point plan to improve India's Olympic performance. तो आज धीरे धीरे हम लोग भी उसी एफर्ट में लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग एक कम्युनिटी पूल के द्वारा we should directly engage in more and more number of medals for our country.
And therefore, today, India is directly signing some of the important memorandum of agreements, understanding with nations who directly excelled in specific sports to train the Indian players overseas. So in such a platform, today we know that we have to integrate with the other countries showing such number of power so as to make our sports very much of viable. Okay, so ये इंडिया ने ऐसा सोचा, चाइना के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. Also, thirdly, if I see that the private investments needs to be harnessed to develop infrastructure. अभी यहाँ पे जो हम लोग का P2P मॉडल है, पब्लिक टू प्राइवेट, वो वाला मॉडल डेवलप करना पड़ेगा. Because today the private industries can only support the infrastructural requirements of the sports market of our country. So therefore today is the time of soft power and not a hard power. तो hard power क्या है? It's the exercise of influence through coercion, through military force, payments and economic sanctions. जो आज करते हैं कौन? यूएसए करते रहते हैं, रशिया करते रहते हैं, ठीक है? तो ये सब हम लोग का हार्ड पावर है. तो हम लोग सॉफ्ट पावर में विश्वास रखते हैं. We go through soft diplomacy. Okay, and we go for a positive global engagement, making the whole world realize about the negativities of decision making, of policy making, of foreign diplomacy. तो यहां पे वही सब बात बोला गया है कि how we can directly see about the progress of the soft power through sports diplomacy. तो ये हम लोग का एक शोकास्ट रहेगा किस चीज के द्वारा? सॉफ्ट पावर के द्वारा. And through this we could directly build the creation of institutional structure which could be founded on development and cooperation. Also, the private sector and civil society engagement is also needed because of the investments coming in from the private sectors. Also, multilateralism is a concept of today's world. ठीक है, तो इन सब से क्या होता है? It's high time India restructures its development through various deeper and effective engagements with some of the other countries. And through this, we could realize that how the fellow developing countries, अगर हम लोग आज बढ़ ले, तो कल परसों हम लोग अपना फेलो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, बीट बांग्लादेश, बीट श्रीलंका, बीट भूटान, बीट नेपाल, चलो पाकिस्तान को तो छोड़ दो, वो लोग तो बात मानेंगे नहीं हम लोग का, तो बाकी इन लोग को भी यहाँ पे इन साउथ एशिया, हाउ कुड वी डायरेक्टली रिवोल्यूशनलाइज all these countries to make their soft power in this sports arena, और कैसे हम लोग साउथ एशिया में ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सकते हैं इन वेरियस इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूडिंग द ओलंपिक्स, इंक्लूडिंग द कॉमनवेल्थ, इन सब में. तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है अबाउट this soft diplomacy by an American political scientist Joseph Nye Jr. Okay, चलो, तो ये होता है आज के लिए. This is all for today. Okay, do attempt this MCQs over here. Okay, and this is one of the main question you can attempt directly. Okay, so this was the answers of 24th September. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.